Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to second session of week 5 lecture 2. In part 2 we have discussed about the communication actively. Let's see first what the communication is. It's a Latin word and have its two parts. That means with, and onus that means one. So it means when we make combination of these two words, come and honest, that means humanus, humanio. It means come with one. So finally it was translated into English as communion, and community can be defined as togetherness, and the verb communicare has been derived, which means sharing something with someone, and this word became communicatio, which is better known as communication. So this is all about the originating of communication word, that it has its grounds in the Latin language. Come, Jonas, it means with one, and unitedly, communio, and in English, communion, and as a verb, it is communicare, and the final shape reflected in the form of communicatio, and in English it is known as in its latest shape, communication. It has four components, four elements. Without missing, without uh, any of this element, the dynamic process of communication is incomplete. So these all four elements are correlated with each other, whereas its first component is to conveying the understanding, seeking understanding, passing information with people, and providing feedback. Necessarily, one after the other element should be followed, then it may a complete communication phase. The factors which are considered necessary for an effective communication are: first is the communicate relentlessly. That means आप अपने ideas, information, thoughts को clearly और frequently with different medias आप बता सकते हैं. It should be simple and be direct. So simple words, simple sentences, and direct meaning sentences have deep understanding, have its their reflection, uh, good reflection to the listener. It is also known, it might be known as a smart communication. So someone should not hide behind the complexity of communication. And communication might be also effective if listen and encourage to input. Therefore, pause, be okay with silence, encourage the other person to offer ideas and solution before you give yours. It's an ethical consideration to give the chance to
other people, listen them carefully, and then talk. If we divide this portion into percentage, it's about aligned with the 80-20 rule. What the 80-20 rule is, that is 80% of listening and 20% of talking. So there is a much huge time to listen that will be used in processing, understanding, and concluding and making your findings to be disseminated through talking. It will be 20%. As far as my knowledge is concerned, I should like to share with you the longest sermon given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his life is खुतबा हज्जतुल वदा, द लास्ट सरमन, आखिरी खुतबा जो आप वसल्लम ने दिया. मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ. आप उस लास्ट सरमन का कंटेंट पेज पे लिख लें, उसको एक दफ़ा रीड कर लें. सेकंड टाइम आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करें और उसको कॉन्फिडेंस के साथ स्लोली स्लोली रीड करें ताकि लोग समझ सकें या आपको खुद उसकी समझ आ रही हो. I think so. If you note that the speaking time will be 3.5 minutes. So in the life of Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, the long communication or longest talking is this last sermon. I conclude from this, the person should be a good listener, and talking phase is almost quarter of the listening, because through listening you go through the things, you listen, your cognition have to work, then there will be some process of understanding, then you will go for some make some conclusion out of it, then it will be the phase of talking. Illustrate through stories. Any type of communication, जब उसके साथ आप मुश्किल से मुश्किल टर्मिनोलॉजी, मुश्किल से मुश्किल जो टॉपिक है उसको जब आप स्टोरीज के साथ अलाई करके पढ़ाएंगे, उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है. क्यों बेहतर होती है? कि स्टोरीज एंड टेल्स हमें मेमोरी में रह जाती हैं. हमें बहुत से ऐसे ड्रामा सीरियल्स सारे के सारे वाक़यात याद होते हैं. डिफरेंट किताबों में जब हमने डिफरेंट स्टोरीज पढ़ी होती हैं तो एज इट इज़ याद रहती है. लेकिन ये लेक्चर जो है ये 6 दफ़ा पढ़ने के बाद भी मुश्किल से याद होता है. वजह क्या होती है कि टेल्स की फॉर्म में एक जो अंडरस्टैंडिंग बन रही होती है वो एक उसी वक्त ही साथ मेमोराइज हो रही होती है और आप उसको समझ चुके होते हैं. जिस चीज़ को हम समझ जाएं उसका बयान करना मुश्किल नहीं होता. तो इसमें जो रोल प्ले करने वाली चीज़ है वो कैसे समझ आती है, वो है कम्युनिकेशन. आपने सामने एक वीडियो देखी, मूवी देखी, तो जहाँ पे आपका देखना, बोलना, सुनना तीनों मिल गए तो वो लर्निंग बेटर होगी. So telling good story creates trust, captures hearts and minds, and serve as a reminder of the real. Affirm with actions. तो सुनने के साथ जब आप देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा फर्म बिलीव होता है कि आपने बात को समझ लिया है. क्योंकि जेस्चर्स जो होते हैं साथ स्पीकर के, उनको जब आप वॉच करते हो तो अल्फाज के साथ वो तालमेल खा रहे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन जो स्टाइल है उसमें लोग आपने देखा है कि हाथों का इस्तेमाल, चेहरे का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल, डिफरेंट जेस्चर्स देते हैं. तो ये तमाम चीज़ें
हिस्सा है कम्युनिकेशन का, और इनको यूज करके हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं. There are seven types of communication, that is verbal, written and electronic. वर्बल जो हम बातचीत करते हैं, रिटर्न आप राइट अप में कोई चीज़ लिख के देते हो, और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपका ईमेल है और वीडियो लिंक है. ये हमारी क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है. नॉन वर्बल इटसेल्फ जो जिद है ऊपर वाले हिस्से की. एंड देयर आर सम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस. फॉर्मल प्रॉपर वर्ड्स में और इनफॉर्मल डिफरेंट जेस्चर्स और साइंस में. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, खुद कलामी भी एक कम्युनिकेशन का हिस्सा है, और लोगों के साथ, ग्रुप्स के साथ. इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल विद इन वन. स्मॉल ग्रुप्स और मैस मीन ओवर लार्ज एट लार्ज कम्युनिकेशन. मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं. ज़रूरी इसलिए होते हैं कि सुपरवाइज़र ने डायरेक्टिंग भी करनी है और रिपोर्टिंग भी करनी है. तो रिपोर्टिंग डाउनवर्ड होती है, बॉटम से टॉपवर्ड होती है. अपने सीनियर्स को, मैनेजमेंट को बताना होता है. और जो डायरेक्टिंग है वो आप अपने जूनियर्स को डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं. तो इसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं. मेमोज हैं. आपने दुकान का मेमो देखा होगा कि वो उसकी ट्रिप्लिकेट रिसीट्स रखते हैं. एक ग्राहक को दे देते हैं, एक पास रिकॉर्ड रखते हैं, एक एफपीआर वगैरह रखी होती है. तो लाइकवाइज जो होंगे ये मेमोज. लेटर्स मीन जनरल लेटर, जो कुछ इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. टेलीफोन कॉल्स इटसेल्फ ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन. फेस टू फेस, आमने सामने मुलाकात, मीटिंग्स बुला के मैसेज कन्वे किया जाता है. कॉन्फ्रेंसेस आल्सो टाइप सॉर्ट ऑफ मीटिंग्स. पीपल आर gathered for some certain purpose. Training में, in training there is a transmitter. One person is a resource person and mediator, and others are listeners and respondents. Same case with the orientation. Annual reports are also the reflection of whole of the year achievements of a person and his working capacity and style. Bulletin are the major highlights, and also there is suggestion box. People convey their comments and suggestions to the management and authorities. Similarly, there are different unions. They work for their group and community. Their contracts are also known as sort of communication. Quality circles mean readings हैं या उसमें कोई sharing of knowledge है, that is also sort of communication. Brochures जो हैं companies के, उसके ऊपर सारी उनकी तफसील लिखी होती है. That is a message from themselves कि वो अपने आप की जो बेस्ट सेलर बनने के लिए या अपनी क्वालिटी और तमाम चीज़ें उसमें बताते हैं. रेट्स बताते हैं, अवेलेबिलिटी बताते हैं, फैसिलिटीज़ बताते हैं. एम्प्लॉई न्यूज़ लेटर, जिसमें एम्प्लॉय से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन जो है आती हैं. एग्जिट इंटरव्यूज़ इज आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. एटीट्यूड सर्वे, जो लोगों से क्वेश्चन दे के करवाए जाते हैं. No doubt in counseling session, and also people have to convey the things to others, and people have to, listeners have might ask something. उनका एक इशू होता है, वो बताते हैं, लोग उसका सोल्यूशन बताते हैं. This is also a sort of communication that is taken around the organization. Evaluation meeting, जहाँ दूसरों के जायजे उसके बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी स्टेटस बताया जाता है. ग्रीवेंस प्रोसीजर्स, लोगों की जो शिकायत, उनका अजाला. पर्सनल असिस्टेंट के थ्रू जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, और कंपनी की रिपोर्ट्स, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग एंड ईमेल, ऑल आर द मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, organizational communication.
पर्पस क्या होता है? नो डाउट पर्पस है कि आप अपने फीलिंग, ओपिनियन, थॉट्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, इमोशन, डिजायर्स, एम्बिशंस और वांट्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ठीक, ये मेजर पर्पस है इसको करने का। अदरवाइज कम्युनिकेशन का मकसद ये भी है कि प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के थ्रू, कॉमन प्लान्स के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाए, जो कि जिनका इम्पेक्ट होता है एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज पे। ऑल दिस हेल्प टुवर्ड्स द म्यूचुअल एक्सचेंज। सिमिलरली विद द सोसाइटी कम्युनिकेशंस होती हैं। सोसाइटल कम्युनिकेशन इज अ नेसेसरी टू यूनाइट द पीपल। सोशल मीडिया क्या है? लोगों का एक नुक्ते पे इकट्ठा होना, लोगों को अंदर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना। और इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि सबका नुक्ता नज़र एक हो। 10 में से कुछ लोग उसके अगेंस्ट होंगे, कुछ उसके खिलाफ हक में होंगे, और कुछ न्यूट्रल होंगे। तो लाइकवाइज जो पब्लिक के चंक्स बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, दीज आर द दैट ऑफ सोसाइटल कम्युनिकेशन। सिमिलरली वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, आप क्लास में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने इदारे के अंदर हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन होनी है। किस तरह की होनी है? कि आपने इंफॉर्मेशन देनी है, लेनी है, किसी की ग्रीवेंसेज हैं, किसी को स्कोर करना है, किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी को जॉब असाइन करनी है, छुट्टी देनी है, छुट्टी लेनी है। ऑल दीज वर्कर्स एंड को वर्कर्स की आपस में डिफरेंसेस, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, ये थ्रू कम्युनिकेशन ही होते हैं। Supervisory communication linkage process. Earlier in the first session, we discussed about that. Supervisor, what do is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. This all is done through communication, that is workflow objectives towards some singular line. Very interesting is the communication model. इसमें कम से कम दो लोग होते हैं। एक है जो आइडिया इनिशिएट कर रहा है, उसे सेंडर बोलते हैं। दूसरा है जो आइडिया रिसीव कर रहा है, उसे रिसीवर बोलते हैं। सेंडर क्या करता है कि वो डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन के लिए पिक्चर, सिंबल, एक्शंस, नंबर, जेस्चर्स, वर्ड्स यूज़ करता है। इसको हम कहते हैं कोडिंग। अब एक आगे प्रोसेसिंग होती है दो लोगों के दरमियान में। उधर डी कोड कर रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, डी कोड कर रहा है इन्हीं बातों को। इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्चर, सिंबल, एक्शन, वर्ड, जेस्चर और नंबर्स, इनको इंटरप्रेट करके इन डिकोडिंग के थ्रू इनको इंटरप्रेट करता है कि उसे उससे क्या समझ आई है। जब वो उसको फीडबैक दोबारा भेजता है सेंडर को, तो पता चल जाता है कि उसको इसकी इन बातों की क्या समझ आई है। दैट्स ऑल अबाउट दिस सेकंड सेशन। विल सी यू इन थर्ड सेशन। अल्लाह हाफिज़।